everyone, my name is Soumya and I am the founder, chef of Foite, which is my home venture, baking home venture. So, how do you feel today in this quarantine? I'm really glad that Amul has given us such a nice opportunity in which different chefs from different backgrounds are coming together and giving all the goodness of the recipes in this quarantine. Quarantine बहुत अच्छा समय है, you know. Everyone is coming together and you are learning so many things and I don't know, I just love it. And I think baking is the one which is keeping me sane. Otherwise I would have gone insane only. I've been baking a lot and today I will share a very simple and easy recipe with you which contains a lot of Amul ingredients like Amul milk, Amul makhan, salted one, and Amul chocolate. The name of my dish would be chocolate dough pots. So let's get started. So I'll be using 75 grams of flour. So this is our refined flour जो हमारा मैदा होता है घर पे. And I'll be using 1 teaspoon of vanilla. You can also use vanilla extract if you have. I'll be using brown sugar, 40 grams of brown sugar. If you have white sugar, it is alright, but I think brown sugar brings out the caramelly, fudgy flavor in this dough, and I would prefer brown sugar over white sugar. I will be using 50 grams Amul butter, which is softened as you can see. And it would be salted. If you're using the unsalted one, that would also go. You can add a pinch of salt in it so that it brings out the best flavor. I'll be using 1/4 teaspoon of baking soda, 25 ml of Amul milk, which I have lukewarmed so that it combines the recipe together. Also, I'm using 55% Amul chocolate, which is this. I think this is the hero of my dish. It is 55%, which is so rich and it brings out the best flavor of my dish. So let's get started. So I will be needing a spatula, and then see, my butter is really soft. So your butter has to be like this. And if you do not have a spatula, it is perfectly alright. You can use like a wooden spoon to mix all the ingredients. So this is my butter, which is 50 grams. So I'll be putting my brown sugar in it. 40 grams of brown sugar. So now we will mix all the ingredients really slowly. We have to combine it, and we don't have to, you know, in the end we don't want कि कोई भी sugar का particle रह जाए. You have to combine it really nicely. You take your time in it. Actually हमारे पास time बहुत है ना quarantine में, so why not use it properly? See, you can see my ingredients are properly mixed, butter and sugar, brown sugar. I will add my baking soda into my flour and I will mix it properly. And this is my sieved flour. So it is always better to use a sieved flour because जो हमारा flour होता है ना, उसमें बहुत सारे lumps होते हैं. तो it's always better कि आप sieve करके use करें, even अपने घर पे और चीज़ों में भी. So I'll add it. ये गया हमारा मैदा. अब इसको भी हम सॉफ्टली मिक्स करेंगे. अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कुकी डो में विस्क क्यों नहीं यूज़ करते. सो बेसिकली हम विस्क इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो विस्क होता है वो एयर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए होता है, एंड कुकी में हमें एयर को इतना इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो इस वजह से हम विस्क की जगह या तो स्पैचुला या तो वुडन स्पून यूज़ करते हैं. हमेशा बेटर रहता है. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कंबाइन ही नहीं हुआ, ये तो ऐसा सॉल्ट की तरह, सॉइल की तरह ऐसा हो रहा है. It is all right. You do not have to worry about it.
बिकॉज इसके अंदर हम जब ल्यूकवार्म मिल्क ऐड करेंगे तो एवरीथिंग विल कम आउट रियली गुड. सब कुछ एक साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएगा. अच्छे से मिक्स करिए आप इस सबको. ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है. अब मैं अपने वनीला जो हमने लिया था उसको मैं अपने मिल्क में ऐड कर दूंगी. इसको अच्छे से ऐसे मिक्स हो गया अभी, ताकि वो इवनली पूरे बैटर में मिक्स हो जाए. ये मैंने 25 ml अमूल मिल्क इसमें डाल दिया है. मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. ये नॉर्मल डो जैसा सख्त नहीं होता. इट इज रियली स्मूथ, वेलवेटी, सॉफ्ट डो. यू कैन ऑल्सो फ्रीज इट इफ यू लाइक, बट इट्स नॉट नेसेसरी because we will be putting the batter in ceramic pots, so it doesn't matter that it has to be really, so see, this is really yummy, nice batter. It looks like peanut butter. Okay, so now meanwhile I will chop my Amul 55% chocolate. I really love this chocolate. So we will be chopping 40 grams of this chocolate. तो हम इसके अमूल की चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स काट लेंगे. Now I will add my chocolate into my dough. अब इसको एक रफ मिक्स दे देंगे हम. काफी बेसिक रेसिपी है, कोई भी बना सकता है एंड कोई भी खा सकता है. एंड एगलेस है तो थोड़ा और अच्छा है. ये इसका बैटर रेडी हो गया है. अगर आपको और चॉकलेट चाहिए, देयर इज नेवर नो फॉर चॉकलेट, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर. तो मेरे पास ये मेरे सिरेमिक पॉट्स हैं, तो यू कैन सी, सो दीज आर सिरेमिक oven proof pots. So I will be putting my batter into it. But if you have ramekins or if you do not have anything ceramic, you can always have a glass dish, जो हमारे घर में सब मम्मियों के पास होती है. So you can spread the full batter into it properly, and then you can bake it in the oven. And then in the end, you can cut these slices. So that is also fine. There's not a hard and fast rule that you have to bake in it. But it is always good to bake in the ceramic pots. So now I'll take a spoon and put the batter like this inside it. You don't have to line it, you don't have to butter it, because हमें demold नहीं करना. जैसे मैंने इसमें 2 स्पून्स के हिसाब से डाला है, तो आप भी अपनी डिश की उसके हिसाब से देखिए कितना सही रहेगा. आपको बेसिकली हाफ से ज्यादा भरना है, तो आपको 3/4 थोड़ा 3/4 टाइप भरना है. तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 स्पून्स डाला है सब में. I love that chocolate, अब मेरे पास ये वाला स्पैचुला है. ये काफी फैंसी लगता है, बट यू कैन यूज द बैक ऑफ योर स्पून. सो ऐसे करके मैं इसको पूरा इवनली कर दूंगी, तो ये इवनली अच्छे से बेक होगा. कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा साइड में लग जाए. ऐसे ऐसे एक एक करके I'll make sure everything is even.
and this last one. आपका ओवन प्री हीटेड होना चाहिए 170 डिग्रीज पे. सो बेसिकली अभी मेरे पास थोड़ा और बैटर बचा है, तो अभी एक बोल और बन सकता है, बट मेरे पास 4 हैं. और इसके ऊपर मेरे पास ये चॉकलेट शॉर्ट्स बॉल्स हैं, तो अगर आपके पास ये हो आप डाल सकते हैं. अगर आपके पास ये ना भी हो तो इट इज ऑल राइट. इट इज नॉट अ वेरी नेसेसरी इंग्रेडिएंट. नाउ it goes into the oven. So I will put it in the oven for 170 degrees for 15 to 20 minutes. So it depends on your oven, like कितनी देर में बेक होता है, but 15 and 20 minutes लगते हैं. So it's in the baking. So that was it. I know it was pretty quick and easy recipe. So if you have any questions or anything, you can put it in my comment section, and you can just see whatever there is, whatever problems or whatever questions you face. It is perfectly alright. बहुत easy recipe है, eggless recipe है, सारे ingredients घर में मिल जाएंगे, कोई problem ही नहीं है. Just make it quick, and I cannot tell you how my kitchen lightens up when I bake these, because पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू हो रही होती है. So whenever you make them, do let me know. All my details are on it. So obviously ज़्यादा टाइम नहीं था, तो I have already baked one. I'll just show it to you. So I have this one. This is how it looks. मैंने ऊपर भी चॉकलेट चंक्स लगाए हैं और अंदर तो है ही, तो ये बाहर से हार्ड है एंड अंदर से सॉफ्ट होगी. देखिए अंदर ऐसे you can just put it like that. So if you see, अंदर थोड़ा चोको चिप फ्लेवर, चोको चिप्पी, एंड अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, बाहर से थोड़ा सा हार्ड. सो आई हैव सीन मेनी ब्यूटी पीपल डूइंग दिस, सो आई हैंडल फूड, सो आई विल जस्ट मेक माई फूड लुक गुड. सो and you can, the best part is you can serve it with anything. I like to serve mine with a bit of sea salt. तो मेरे पास sea salt है, तो I'll put some sea salt on it because I like a lot of sea salt. So this is how it is. You can put a vanilla ice cream. अमूल की vanilla ice cream बहुत अच्छी है. You can put a scoop of vanilla ice cream, and इसका डो जो है you can keep it in your freezer for about 15 days. उसको कुछ नहीं होगा. So whenever your guests are coming, you can take it out 20 minutes before. You can put it in your cup. You can put the chocolate. You can put everything. Bake it for 15 to 20 minutes. Bring it out. Put the ice cream scoop. Drizzle some chocolate sauce, generous amount of chocolate sauce or sea salt as I like it, and then you can just serve it in front of them as warm. I hope you really like my recipe because I love it. It's my go-to-go recipe. It changes mood. So whenever you want, you can make it out. It's very super easy. Let me know if you have any questions or anything. Thank you so much. It was a pleasure doing something like this with Amul. I cannot be happy and more, thankful to Amul. So thank you so much. Bye.